Hello dear students, how are you all? I hope you are fine and fantastic. So children, in the last period we have discussed about the Belgium's ethnical composition in power sharing topic of our SST, okay, of political science. So today I am in this video I am going to explain you about the ethnical composition of Sri Lanka. In the last period, what is the meaning of ethnical word that already we have discussed. Okay, so now in this video we will learn about the ethnical composition of Sri Lanka. So जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि श्रीलंका जो एक कंट्री है वो हमारे इंडिया के साउथ साइड में है। साउथ पार्ट में इंडिया के श्रीलंका है, आइलैंड कंट्री है, आइलैंड है। सो इसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं पावर शेयरिंग चैप्टर का। ये जो सेकंड पार्ट का वीडियो हमारा है एथनिकल कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं श्रीलंका की कंपोजिशन किस तरीके से है। तो हम अगर श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका में भी अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग तरीके के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जिस तरीके के हमने बेल्जियम में देखे थे। तो इन श्रीलंका, if you can see here, middle part is covered with the Sinhala speaking community people, Sinhala speaker we can say, and this is what the different I have shown. Let's have a look. So in Sri Lanka, Sinhala speakers are 74%. The composition is in that way. Language के terms में अगर हम बात करेंगे तो Sinhala speaker are 74%. And when we will talk about the Tamil speaker, composition of the Tamil speaker in Sri Lanka, so there is 18%. There are 18% Tamil speaker in Sri Lanka. Okay, but these Tamil speakers are also divided into the two terms. That is the 13% are Sri Lankan Tamil and 5% are Indian Tamils. Okay, means Tamil speaker overall 18%, out of that they are divided 13% Sri Lankan Tamils and 5% Indian Tamils. अभी एक ऐसा श्रीलंकन तमिल किसको बोलते हैं? जो जिनके पेरेंट्स एंसेस्टर जिसको बोलेंगे जो श्रीलंका में ही पहले से थे और वो तमिल भाषा बोलते हैं तो उनको हम बोलेंगे श्रीलंकन तमिल्स। Whereas when we will talk about the Indian Tamils, Indian Tamil मतलब जिनके फोरफादर, जिनके एंसेस्टर्स इंडिया से श्रीलंका में आए ब्रिटिशों के जमाने में, कुछ जैसे कि रबर प्लांटेशन वगैरह कुछ करने का रहा। सो फॉर दैट पर्पस दे केम ओवर देयर and they started settling out over there and they settled over there, we can say. So those who came from the India, they are the Indian Tamils. The composition of the Indian Tamil in Sri Lanka is 5%. This I have shown over here. You can see this middle part, maximum part is covered by the Sinhalese language speaking, means Sinhala speaker we can say, Sinhalese people. Then here this lines which I have shown with the blue color, that are the Sri Lankan Tamils people. Okay, and Indian Tamils are shown with the dot. These dots which I have shown over here, these are the Indian Tamils with the dots. Indian Tamils here. So आप अगर देखेंगे तो मिडल का जो पार्ट है 74% पार्ट जो है वो सिंहाली स्पीकर लोगों ने कवर किया है। और अगर हम बात करेंगे तो तमिल स्पीकर तो ये स्कैटर्ड तरीके से दो अलग अलग तरीके से है। अब ये हो गया लैंग्वेज के तरीके से कि लैंग्वेज के हिसाब से कंपोजिशन किस तरीके का है। व्हेन वी विल टॉक अबाउट द कम्युनिटी, ओके, सो दैट आल्सो वी आर गोइंग टू सी। सो कम्युनिटी की अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। तो अगर हम रिलीजन की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ द बुद्धिस्ट कम्युनिटी people, those who believe in the Buddhist religion. Okay, and whereas second point is Tamil speaking people are both Hindus and Muslim. Those who are the Tamil speaking people, they are Hindu also, they are Muslim also. And 7% population is of Christians, they speak Tamil and Sinhala. 7% people speak Tamil and Sinhala. So mixed composition है। मतलब अगर हम श्रीलंका की बात करेंगे तो अगर हम लैंग्वेज के टर्म्स में देखेंगे और रिलीजन के टर्म्स में देखेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन, वैरायटी है और अलग अलग रिलीजन के लोग भी रहते हैं, मानने वाले रिलीजन के लोग भी है और लैंग्वेज स्पीकिंग भी अलग अलग है। अब इसको हम इंडिया के साथ में कंपेयर करेंगे तो हमारे इंडिया में तो बहुत सारे रिलीजन के लोग हमको पाए जाते हैं and we know that many people are living in India of different community. So you may have the question in your mind that in the last video we have learned about the Belgium model ethnical composition we can say, and in this video we are learning about the Sri Lanka. So the question may come in your mind that why we have to learn this much, right? What is the relation with that? So our topic is a power sharing.
तो हमको ये देखना है कि इस तरीके से डाइवर्सिटी कंट्री के अंदर है, तो ये डाइवर्सिटी मतलब भाषा बोलने वाले लोगों की डाइवर्सिटी है, एंड डाइवर्सिटी इज ऑफ द religion also. So this type of diversity is there in the country. So is the country able to rule in a proper way? क्योंकि ऐसा बहुत बार हो जाता, डाइवर्सिटी अगर पाई जाएंगी तो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को लगेगा जो मेजोरिटी में है कि हमारा ही राज होना चाहिए, हमारे हिसाब से कानून कायदे हमारे हिसाब से सब होना चाहिए, बिकॉज वी आर इन द मेजोरिटी टर्म्स. ओके, सो मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी को डोमिनेट कर रही है, कैसा क्या है, मतलब किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है. इसके लिए पावर शेयरिंग, मतलब वो पावर शेयर करके रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, कि इस डिफरेंसेस की वजह से उनके बीच में प्रॉब्लम हो रहे हैं, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ड्यू टू दिस डिफरेंसेस, और whether they are sharing the power between them, or what is there the next step. So that is the important part of the this topic. So you have to remember, because many of the time question may come in the examination about the composition, ethnical composition of Sri Lanka. Explain the ethnical composition of Sri Lanka. So in that case you have to write this point in that answer. Sinhala speaker 74%, Tamil speaker 18%, and all these points which I have already explained in the video. So children, this was the composition of the Sri Lanka, and this was the condition over there, and we are going to learn now whether they have taken this diversity in a positive terms or whether they have taken this diversity in the negative terms. Means whether, because what happens, diversity is there if in the country, but if we are taking the diversity in the positive terms, so country may become more powerful, and that can increase the country's unity and all that things, like in India, which we are having already. So this part is completed here in the last video, and this video ethnical composition of Belgium and Sri Lanka I have explained. Now children, these two examples of Belgium and Sri Lanka you have to keep in your mind, because that may be linked with the other topics in the political science. Next chapters also it may have a link with that. Sometimes for referring or explaining particular concept, we may recall this example. So you have to keep it in your mind, the composition language wise of these two particular countries. Now in the next video I will be explaining you what happens over there due to this diversity in Sri Lanka, what happens, and due to diversity in Belgium what happens. That parts we are going to see in the next video. Okay, so you are requested to note down the important points, underline the important points in your textbook, read the textbook, all the points are also given in the textbook, and maintain the notes properly. Thank you.